Welcome to CSN India YouTube channel. देखाउछि छात्र छात्री मान भितर आईन कानून संविधान मानवाधिकार विषय ने की खूब कम सचेतनता अच्छी चर्चा आलोचना प्राय नहीं एवं सामाजिक दायित्वबोध सी भी अपेक्षाकृत कमी जाउछि। तेणु समाज प्रति देश प्रति एवं मानविकता प्रति मनुष्य प्रति जो दायित्व हवा कथा ताकू लेकिन सचेतनता तैयारी करबा हमर उद्देश्य। विशेषकर आईन कानून संविधान मानवाधिकार विषय ने कि छात्र छात्री मान भितर सचेतनता तैयारी करबा एवं सेमान भितर समाज प्रति दायित्वबोध तैयारी करबा एवं भविष्य में जो से बड़ हे समाजर एवं हमर इवन सरकार विभिन्न पद पदवी रे समाज विभिन्न दायित्व नेबे से जड़े नेता भाव हो शिक्षक भाव हो कि जड़े सामाजिक कर्मी भाव हो दायित्व ने से भितर ये मूल्यबोध जदि तैयारी ताहले आम निश्चित भाव बहुत बड़ उपलब्धि हम। नमस्कार, myself Ranjit Sutar, Program Coordinator, Advocacy and Networking of CSNR. For the last few years, CSNR is committed to improving human rights culture with the new generation. In this process, legal literacy among the college and university students to raise awareness about the implementation of the various laws. We also aim to nurture a generation that is knowledgeable about the legal issues and uphold the values of our constitution. Constitution and laws and both national and international human rights standards. In particular, we focus on the laws, students of laws, mass communication and journalism, and social work students of different institutions. This knowledge is crucial for enhancing the living condition of the wider community, particularly those who are marginalized or from the socially disadvantaged backgrounds. In this endeavor, the CSNR with the National Institute of Social and Social Science, NISWAS, a leading educational institute based in Bhubaneswar, who jointly organized an essay competition among the UG and PG students of various colleges in Bhubaneswar and Cuttack geographical area in February in the last year on the topic role of women and childless in the police station for the safeguarding the rights of women and children. On 13th April 2024, NISWAS and CSNR jointly organized the essay prize giving ceremony and a seminar on the subject the role of the students in safeguarding the constitution at Ambedkar Hall of National Institute of Social Work and Social Science. The meeting began with paying tribute to Dr. B.R. Ambedkar by presenting flowers. Dr. Ambedkar's tireless efforts in championing equality, justice, and social reform continue to inspire generations. His legacy remains a guiding light, illuminating the path towards a more inclusive and equitable society. The guest speaker of the seminar, Professor Dr. Bijay Bohidar, retired, emphasized the crucial role of students in protecting the Constitution and human rights in today's societal context. He discussed the multifaceted aspects of the Constitution and highlighted the biography of Bhim Rao Ambedkar, the founder of the Indian Constitution. स्वाधीनता आंदोलन प्रक्रिया भितर गोटे गणतांत्रिक चेतना एवं गणतंत्र
स्थापन करवा गोटाए इच्छा भारतर चारिआडे जन्म नहीं एवं से भारतर संविधान पाई जो गुड़ाक चतुर्थ अध्याय लिखाई एगुड़ाक सरकार कार्यकारी करें धारा 29 लिखाई जे आर्थिक वैषम्य को राष्ट्रनीति माध्यम सर्वनिम्न स्तर को आने को हम धनी गरीबों भितर जो पार्थक्य एतिकी जदि अच्छी यही स्तर को बढ़ाओ नहीं। Ms. Supriya Das, a noted TV anchor and journalist, was the guest of honor. She observed that the media's influence is gradually diminishing in the present time. She appreciated CSNR and Nishwas for organizing such conference under these circumstances and stressed the importance of the media's role in protecting the constitution and human rights in India. She encouraged students to take the lead in protecting the constitution, human rights and dignity by promoting decency. संविधान आमको सुरक्षित रखे एवं ताकू आमे सुरक्षित रहिबा को हेले संविधान रो प्रत्येक दिग को आमको सुरक्षित रखिबा पई प्रयास करबा को पड़िबो। गोटे मुक्त स्वाधीन एवं उत्तरदायी गणमाध्यम चाहे समाज जहार मु प्रतिनिधि वर्तमान किंतु विगत किछि वर्ष भितर आमे देखुचे गणमाध्यम कोन करबा उचित कोन करणीय और कोन वर्जनीय ता भितर टिके द्वंद्व रहिछि। अनेक छथि गोटे जीवंत दस्तावेज हम पाखरे अछि हम संविधान रो प्रस्तावना जहाँ आम संविधान आत्मा बोली कहू आमे भारतर जनसाधारण आम पाखे कि अधिकार अच्छी कि कर्तव्य और दायित्व राष्ट्र प्रति आम रहा उचित ए समस्त कथा आमको सूची था आम संविधान। अनेक समय कहुच्छे गोटे सिद्धांत विहीन राजनीति चली परिश्रम विहीन धन उपार्जन कथा कहुच्छी विवेक विहीन सुख आम चाहूचे जो थे आउ जार जहाँ घटी जाओ आम सुखरे रहू एभली एक भावना रोचे गोटे चरित्र विहीन शिक्षार कथा कहुच्छी सदाचार विहीन व्यापार कथा कहुच्छे तमाम कथा कहुच्छे किंतु मोर आशा आपण मैंने तार व्यतिक्रम हेबे एवं बहुत आगकू जिबे बहुत आशा आपण मानक ठारू हमर अछि। At the end of the program, the successful students in the essay competition were honored with certificates and other prizes.